हमने कल जहां तक किया था वहां से स्टार्ट करते हैं, आज मैटर्स को इंशाल्लाह खत्म करेंगे। ये रहा हमारा मेटल। हमने रिएक्शन ऑफ मेटल किए थे, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए पहला रिएक्शन कर रहे हैं, इसके बाद अगला रिएक्शन कर रहे हैं। अभी मैं इसको दोबारा कराऊंगा आपको। वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम कर लेते हैं एक दफा हमने कर लिया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद HCl। अच्छा ठीक है, अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। चलिए जी, पहला हमारा मेटल है पोटाशियम। ये आ गया पोटाशियम के पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। बोलिए अगला एलिमेंट कौन सा होगा? बोलिए एल्युमिनियम के बाद अगला एलिमेंट कौन सा होगा? सर जिंक। जिंक, वेरी गुड। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। देखें ये आ गया H2O, ठीक है। ये सब H2O के साथ रिएक्ट करेंगे। 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 अब होगा क्या, गौर से देखिएगा। व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, तो ये वाटर कोल्ड होगा, कोल्ड कोल्ड वाटर में रिएक्ट करेगा। इसी तरह से जब सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पानी भी कोल्ड हो सकता है। सर व्हाट इफ इट्स इसका हॉट? बिल्कुल सही कहा आपने, वाटर प्लस सॉल्ट, ये सारे के सारे कोल्ड होंगे। ये सारे के सारे कोल्ड होंगे सिवाय कुछ शुरू के दो जो है वो दो तीन कोल्ड के साथ हो जाएगा, बाकी इतने स्टेबल होते हैं बाद में तो रिएक्ट भी नहीं होगा। तो भाई यहां लिख रहे हैं हम कोल्ड, यहां हम लिख रहे हैं कोल्ड, कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर का मतलब है रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, कोल्ड वाटर है। इसके बाद अगर कोई रिएक्शन होगा तो वो स्टीम से होगा, आयरन तक स्टीम से होगा, इसका मतलब है गैस।
गैस का मतलब है स्टीम, गैस का मतलब है स्टीम। Sir, जी बोले। sir, but why not with cold water? You know that some reaction require energy of activation, right? So cold water does not provide such energy. That's why no reaction with cold water. Okay, sir. Okay. Now when potassium react with water, potassium hydroxide is formed and hydrogen gas. Potassium hydroxide is formed along with hydrogen gas. So right here 2, right here 2, right here 2. Now the whole equation is balanced. 2 potassium, 2 potassium, 2 oxygen, 2 oxygen, 4 hydrogen, 2 plus 2, 4 hydrogen. Now same with sodium hydroxide. Same with sodium hydroxide with hydrogen. So 2 sodium hydroxide, 2 H2O, 2 sodium. Same with calcium. We know that calcium belongs to group 2. That's why the formula of calcium hydroxide different. 2 would be below the OH because the valency of calcium is 2. बेटे बात समझ आ रही है यहां तक आपको? Yes, sir. So Sir, 2, yes, yes. sir, for the elements, they are the same elements, yeah. Same element means? No, like for example, we remember the elements, yeah. The in order. Already the will only those elements come. We only consider these, right? All are metals. So mostly these metals, because we know that they are in the reactivity series, while others are not. So we are not sure about other elements. Sir. These metals are in your syllabus. Sir, is the reactivity series different for each, like with water, oxygen, and all? No, the reactivity remains same. Sequence of the reactivity is same. Okay. Now, when magnesium react with the water, magnesium oxide is formed and hydrogen gas. When aluminium react with water, aluminium oxide is formed along with hydrogen. When zinc react with water, zinc oxide is formed along with hydrogen. The question is not balanced, I know. I will balance after the completion of after the completion till iron. So Fe2O3 is formed along with hydrogen. Now look at this equation. Here we have 1 magnesium, 1 oxygen. Here we have 1 magnesium, 1 oxygen. 2 hydrogen, 2 hydrogen. Equation is balanced. Now second is Al2O3. So we have here we have 2 hydrogen, here we have 2 hydrogen. Here we have 3 oxygen. So whenever you have 3, convert into 6. So now you have 6 oxygen. So write here 6. Sir, Now aluminum become 4. Just a minute. And hydrogen becomes 6. Yes. Sanam, yes. sir, why would we convert it into 6? L2.
Sorry, 5 will be converted into 6. 6 with 6. The 6 H2O. 6 H2, because here you have 6 hydrogen, because you have 6 oxygen. Now you can see that here we have 3 times 2 is 6. That's why I put here 6. Okay. Okay, so when you put here 6, hydrogen become 12. Hydrogen become 12. So you have to write 6 here. Sir, Yes. sir, can't we just write 3 in front of hydrogen and 3 in front of water and 2 in front Yes. of aluminum? Yes, you can also do this. 2, 3, 1, 3. Yes. Now look at either the equation is balanced. Now here we have 3 oxygen, 3 oxygen. Here we have 6 hydrogen, 6 hydrogen, 2 aluminum, 2 aluminum. Both are correct. Both are correct. Now zinc. Now zinc. Here we have 2 hydrogen. Here we have 2 hydrogen. Here we have 1 zinc. Here we have 1 zinc. 1 oxygen. 1 oxygen. So equation is balanced. Now in the next, here we have 2 iron. Here we have only 1 iron. So write here 2. Here we have, so follow the same aluminum pattern for iron. Follow the same pattern as iron, aluminum. भाई इस बात समझ आ रही है? Are you getting my point? Yes, sir. Sir, Yes. sir, but I have a question. Like from magnesium onwards, why will it be magnesium oxide? Because you use steam. Steam is very energetic. It will split this OH and convert this hydroxide into oxide. Okay, sir. Now, no reaction. Sir, but lead is above hydrogen in the reactivity series. Yeah, lead is above the hydrogen. Above the hydrogen. Yes. Yes. Exactly. Lead is above the hydrogen. But listen, energy of activation with the oxygen and lead reaction is very high. That's why I think lead is not react with water. Are you getting my point? But sir, can you repeat? Okay, sir. Bete, I told that the activation energy of lead is more. It's high. That's why the reaction is not possible with water. Okay, sir. In normal condition, lead is not dissolved. But when you Sir? increase the pressure, now listen, first of all, listen, my. When you increase the pressure, it will react with the water. But in normal condition, lead cannot react because it requires a lot of energy. And this energy is provided by the high temperature or by the pressure. Ji bole. Sir, you said like so lead is more reactive, yeah? More reactive than H2 to yes, displace more it. most reactive. Yes, more reactive. But More listen, reactive. So, yes, listen. More reactive. But lead require the reaction of lead with water require a lot of energy, right? So this reaction has high energy of activation. That's why no reaction with water or steam. No reaction with water
or steam. Sir, but isn't like that's still like more reactive, so why wouldn't it like not react with H2 and displace it? Bete, I told you again, Bete, sometime reaction is possible, right? But it requires a lot energy of activation, right? So if the energy of activation of any reaction is very high, right? So reaction is not possible. For example, हम कोई खाना बनाते हैं तो वी नीड एनर्जी, राइट? अगर हम शुगर पानी को मिलाते हैं तो इजिली डिजोल्व, लेकिन जब हम किसी किसी दूसरे केमिकल को पानी में मिलाते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता है. इट रिक्वायर्स हीट एनर्जी. व्हाई? बिकॉज इट हैज हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. कभी आपने देखा हो कि गोश्त बन रहा हो, हड्डी भी गल गई हो, हड्डी आपने मुंह से चबा ली हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज बोन हैज high energy of activation to become soft. That's why the reaction is not possible. So I know that lead is above the hydrogen. It may replace hydrogen, but at high pressure, right? Drastic condition is required. This is for the lead. Okay, sir. Sir, so what will be the equation if there is high pressure? So same lead oxide PbO. Okay, sir. Now reaction with HCl. Reaction with acid. Yesterday we have discussed reaction with acid. Look it again. Here we have one potassium, KCl, HCl. KCl is formed along with hydrogen. The reaction is very violent. This reaction is very violent. This is very violent reaction because it belongs to group 1. So when metal react with acid, salt plus hydrogen gas is formed. So group 1 show violent reaction. Calcium show violent reaction. Calcium also show violent reaction. Then magnesium. Now it's very difficult, right? So reactivity decreases. Reactivity decreases. Now decreasing is reaction with dilute. Decreasing is decreasing is now let आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, decreasing is. But when lead is also react, but with decreasing ease. So rate becomes slow. Copper, silver, gold, no reaction with dilute, but can react with concentrated. So no reaction with dilute, acid, with dilute HCl, they react.
they react with concentrated HCl to form salt and hydrogen. Are you getting this point or not? Yes, sir. ये कल मैंने कराया, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था. चलिए आगे बढ़ते. This is called displacement power. This is called displacement power. This is called displacement power. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Sir, जी जी. so below those that are below H, elements below H would be no reaction. Yes, no reaction. Okay. So, sir, Yes. what does decreasing ease mean? Decreasing means more energy is required. The rate is very slow. The production of hydrogen is very slow. So, meaning the acid would be need to be in a high temperature. Yes, but we are discussing at normal temperature. Okay. Now next is we have discussed alloy, we have discussed reactivity series. So write some displacement point to show displacement reaction, right? So displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction. So displacement reaction occur. Displacement reaction take place. Displacement reaction take place when a more reactive metal is placed in the salt solution of a less reactive metal. Less reactive metal. This is point number 1. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ more reactive metal has a higher tendency to form ions. It replaces less reactive metal from its salt. For example, now look at this is copper.
This is copper. This is copper. And this is this is silver. Silver nitrate. This is copper. And this is silver. And this is nitrate. This is nitrogen. Here we have 3 oxygen. One oxygen. This is nitrate. This is oxygen. This is oxygen. This is oxygen. So this is nitrogen. This is oxygen, oxygen, oxygen. This is nitrate, silver nitrate. This is silver nitrate. This is silver nitrate. So, क्या बता सकते हैं which one is more reactive, copper or silver? Copper. Copper is more reactive. Copper is more reactive. So copper has the tendency. Copper has the tendency. Copper has the tendency to remove silver from nitrate. Are you getting my point? Yes. Yes, sir. So 2 silver nitrate are required. 2 silver nitrate are required for 1 copper. For 1 copper. For 1 copper, 2 silver nitrates are required. Sir, Now, yes, why 2 silver nitrate? I will tell you after the completion of the equation. Because copper has the tendency, because copper has +2 charge. So it has 2 valency. So 2 nitrate are required for 1 copper. So here we have copper. So it will break, it will displace. Now here we have 1 nitrate. And here we have another nitrate. So it requires another nitrate. So this nitrogen.
This is oxygen. ये आपके पास नाइट्रेट आ गया. एक ऑक्सीजन यहां लगा, एक ऑक्सीजन यहां लगा. आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाने के लिए. तो देखा आपने, नाइट्रेट, कॉपर ने सिल्वर से नाइट्रेट ले लिया. बताइए अब कितने सिल्वर बचेंगे? 2 silver. तो ये एक सिल्वर आ गया, ये दूसरा सिल्वर आ गया. क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है कि नहीं आई है? मैं आपको इक्वेशन में भी लिखा के दिखाता हूं. देखें, ये रहा रेड कॉपर, ये आ गया सिल्वर, और ये आ गया नाइट्रेट. आपने रिएक्ट किया, कॉपर एक, नाइट्रेट हमें चाहिए होंगे 2, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2. जब नाइट्रेट 2 हो गया तो यहां भी 2 आना चाहिए, प्लस 2 सिल्वर. सो कॉपर डिस्प्लेसेस. बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? Yes, sir. So copper metal, if copper metal is placed, if copper metal is placed in a solution of silver nitrate, copper displaces silver from the silver nitrate solution. बोले आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Sir, is it because copper has a valency of 2? Yes, copper has 2 valency, as I told you. So we need 2 silver nitrate. Okay, sir. Now, take a conical, take a test tube. Now, here we have colorless solution, silver nitrate. This is silver nitrate. Now add copper in it. Copper in it. So, can you tell me color of copper nitrate? Yellow orange color, right? Yes, So sir. silver nitrate, color of silver nitrate, right? Copper nitrate, color of copper nitrate, and copper nitrate is a blue color. So when you add silver nitrate, copper nitrate is formed. Copper nitrate is formed, which is blue color. Blue color. So silver nitrate is colorless. So when you observe color change, it means copper displaces silver.
Are you getting my point or not? Sir, copper is white. Copper is pink. Pure copper is pink. Okay, sir. Now, look at another example. Now, look at another example. Here you have, now you have magnesium. Now you have magnesium. Magnesium. Let's suppose this is magnesium and this is sulfur. Sulfur. This is also sulfur. Another oxygen is required. This is sulfate. SO4 minus 2. This is magnesium sulfate. This is magnesium sulfate. Magnesium sulfate. Magnesium sulfate. Magnesium sulfate. Magnesium sulfate. This is another magnesium sulfate. So, can you tell me which one is more reactive? Copper or magnesium? Magnesium. Magnesium. Magnesium is more reactive. So, no reaction. So, no reaction. They remain same. So, no reaction. Why no reaction? Magnesium is more reactive than copper. Exactly, no reaction because magnesium is more reactive. More reactive than copper. Are you getting my point or not? Yes, sir. So we have discussed why we have discussed alloy, we have discussed displacement reaction, we have discussed reaction of metal with water. So next topic is extraction of metal, right? Next topic is extraction of metals. Extraction of metal. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. बताइए और क्या चीज होती है और
बताइए what is ore? Sir, it's a mineral that contains a high concentration of a metal which is needed. Exactly, ore is a mineral. Mineral, what is mineral? Compound. Mineral which is obtained after the mining. बात समझ आ रही है? Yes, So sir. write the okay, alhamdulillah. First write the definition of the ore. A natural occurring mineral containing a valuable metal. A natural occurring mineral containing a valuable metal. Now, what is mineral? Yes, what is mineral? Yes, what is mineral? Sir, like after it's obtained after mining. Yes, simple definition is mine. The mineral, the word mineral is derived from the mining. Sir, it is like Yes. mineral like also like an element, like for example gold. uh, So what is an example of a mineral? I need few minutes, right? I can distinguish ore and mineral, right? Now listen. They are obtained after mining. After mining. But this definition is not scientific, right? So the scientific definition is natural occurring inorganic solid with definite composition. Different composition. For example, Fe2O3, it is ore. It is also mineral. So we can obtain, आपके क्वेश्चन का आंसर है, so we can obtain iron metal. Now next is silicon oxide. It is mineral, but it is not ore because we cannot. It is not an ore because we cannot get silicon from SiO2. आपको अब डिफरेंस पता चल गया? What is the difference between mineral and ore?
Yes, sir. Now, next is normally ores are metal oxide. Normally ores are metal oxide. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो याद रखिएगा, if metal in metal oxide ore is more reactive, then extraction is very difficult. Extraction is very difficult. ओ भाई वो तो छोड़ेगा नहीं ना ऑक्सीजन. आपको बात समझ आ रही है? If metal is more reactive, then no one can isolate it from the oxide. Yes, sir. तो बताइए, which two metals are which metal is lowest in reactivity series? Platinum. Platinum. So we can extract. So which one? It is less reactive, right? Platinum is less reactive. Similarly, gold is less reactive. So we can extract these metal easily. So aluminium. Now look at the reactivity series again. Now these are the reactive metals, right? So here we have zinc. And here we have aluminium. So zinc and metals lying below. Zinc आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जी, यहां से लेके यहां तक आप देखें गौर से. एक ये मेटल्स हैं. एक ये मेटल्स हैं. तो भाई जिंक and metals lying below can be extracted from their oxide through heating with carbon. So zinc and metals below the zinc
in reactivity series can be extracted from their oxides through heating with carbon. Through heating with carbon. Next, aluminium. So next is aluminium and metals above the aluminium. Above the aluminium in the reactivity series can be extracted through electrolysis. Through electrolysis. अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस एक मुश्किल तरीका है. Through electrolysis, because these oxides are very stable. बोले आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो आपको मालूम चल गया कि एक्सट्रैक्शन कैसे होगी. तो बताइए आयरन की एक्सट्रैक्शन कैसे होगी? क्या इलेक्ट्रोलाइसिस से होगी या हीटिंग विद कार्बन होगी? Heating with carbon. Heating with carbon. So now start extraction of iron. Extraction of iron. So extraction of iron. So we need a blast furnace. So extraction of iron. Extraction of iron. So we need a diagram. This is not clear.
Sir, what is hematite? हेमेटाइट इज आयरन ओर। अभी लिखते हैं हम अभी ना, Okay. पहले मुझे ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम बनानी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छी सी डायग्राम मिल जाए, इस पे हम काम करें, यही समझ आती है। अब इसमें ये ब्लू ब्लू कलर का आ गया, चलिए यही डायग्राम लेते हैं, फिर इसको मैं खुद ही कुछ ना कुछ चेंजिंग करूंगा। चलिए जी, आइए एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करते हैं। चलिए जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो भाई ये जो आपको बना के दी है, पहले गौर से समझिएगा। ये जो है ये ऐसे, ये दो जगह जो दी है, ये दी है हॉट एयर के लिए। हॉट एयर, गर्म हवा यहां से जाएगी, हॉट एयर। उसके बाद ये जो दो जगह दिख रही है आपको ऊपर, ये दी हुई है वेस्ट गैसेस के लिए। यहां से ये निकलेगा, ये क्या चीज है, वेस्ट गैस। मैं आपको बताऊंगा कि होगा क्या पूरा प्रोसेस, वेस्ट गैसेस। अच्छा, जो आपने ये ऊपर से डाला हुआ है, ये आपने इसमें डाली है और, यहां से आपने डाली है इसके अंदर और। देखिए ये यहां से जाएगा यहाँ, यहाँ आएगा, उसके बाद इसने ऐसी शक्ल बनाई हुई है इसकी। हाँ। ओहो, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहां से ये इस तरह से आके इसको मिलेगा,
यहाँ इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये रॉ मटेरियल जो आपने डाला है, सुकून से जाएगा ये अंदर आराम आराम से। ये क्या चीज डाली है आपने? ये इसके अंदर आपने डाला रॉ मटेरियल। मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको, पूरा प्रोसेस, परेशान नहीं होइएगा। यहां से डाला है आपने लाइम स्टोन, यहां से आपने डाला है हेमाटाइट और हेमाटाइट और यहां से आपने डाला है कोक, यहां से आपने डाला है लाइम स्टोन, ये सारी चीजें आपने डाली हैं इसमें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तीनों चीजें आपने इसके अंदर डाल दी हैं, ठीक है। अब जो नीचे बना हुआ है ये भी देख लीजिए। नीचे कचरा आ जाएगा, नीचे कचरा जमा होगा। ये कचरा जमा हो रहा है सारा, इधर कचरा जमा होगा। चलिए आइए इसको करते हैं, सही बनाते हैं इसको। मैं अभी आपको पूरी डायग्राम समझाऊंगा, पूरी वर्किंग समझाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये जो इसके अंदर है यहां से लेके यहां तक ये कचरा है, ठीक है। ऐसे कहते हैं स्लैग। कहां तक के स्लैग है? यहां तक के स्लैग है। तो इसलिए इसने इस तरह की लाइनें बना देते हैं इस पे। ये स्लैग है, ये कचरा है। मट्टी आती है ना उसके साथ, मिट्टी लोहे के साथ, तो वो स्लैग है। अभी मैं सब डेफिनेशन लिखाऊंगा। स्लैग मीन्स कचरा। इसके कहते हैं स्लैग। SLAG स्लैग। अच्छा, यहां से लिख के निकलेगा आयरन। यहाँ टैप लगा होगा, आयरन निकल जाएगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यहाँ हीट हो रहा होगा। बोले बात समझ आ रही है? चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे आयरन ओर। बताइए आयरन ओर का नाम क्या है? Hematite. हेमेटाइट। हेमेटाइट। इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड प्लस impurities like sand etc. बताइए क्या क्या चीज रिक्वायर है? Limestone. लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन और कोक मींस कार्बन।
limestone. What is limestone? Sir, sedimentary rock. Calcium carbonate. Limestone is calcium carbonate. And hematite. Hematite is iron ore, limestone, coke are required. तो बताइए ये सारी तीनों चीजें कहां से लोड की जाती हैं? This is called loading. This technique is called loading. LOADING. This is loading. तो बताइए भाई ये तीनों चीजें कहां से लोड की जाती है ब्लास्ट फर्नेस से? दिस इज ब्लास्ट फर्नेस. भट्टी कहते हैं उर्दू में, भट्टी. ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस. बताइए कहां से डाली जाती हैं ऑल दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स? एट द Sir, टॉप from the और top. एट द बॉटम? जी बोले. Sir, from the top. From the top. So next point is hematite, limestone and coke. All are loaded from the top. ऐसी बात है. किसका? टॉप ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस. बताइए हॉट एयर टॉप से डाली जाती है कि बॉटम से? Bottoms. बॉटम से. सो हॉट एयर is introduced at the bottom of the furnace. क्या यहां तक बात समझ आ गई है? बोले Yes, यहां sir. तक बात समझ आ गई है? नाउ केमिकल रिएक्शन. नाउ केमिकल रिएक्शन. बताइए आपने कोक डाली है ना, कोक. तो कोक क्या होती है? मेरी बात गौर से सुनिएगा. कोक इज कार्बन. कोक प्लस ऑक्सीजन and form carbon dioxide. बता सकते हैं ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? From atmosphere. हॉट एयर से आ रही है, हॉट एयर से. ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? हॉट एयर. फ्रॉम हॉट एयर. This reaction is called oxidation. So carbon plus oxygen give carbon dioxide. Carbon is solid. Oxygen is gas. Carbon dioxide is gas. बोले यहां तक बात समझ आ रही है? Yes, sir. Now
This carbon dioxide again react with carbon and form carbon monoxide. Carbon monoxide. बताइए अब ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? बताइए ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? It's a reduction. Reduction. रिडक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन निकल गई है और एक ऑक्सीजन निकलने के बाद कार्बन ने उसको ऑक्सीजन बना लिया, तो कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन and form carbon monoxide. So carbon dioxide is reduced, carbon is oxidized. Carbon dioxide is gas, carbon is solid, carbon monoxide is gas. So this is step 1. This is step 1. Formation of carbon monoxide. This is step 1, formation of carbon monoxide. Monoxide. Now, step 2. Step 2. In step 2, carbon monoxide reduces iron to Fe plus 3CO2. So 2 iron is formed, 3CO. It is solid, carbon monoxide is gas, iron is liquid because we have 1000 degrees centigrade temperature in the furnace. बताइए this is oxidation or reduction? Reduction. So carbon monoxide is oxidized and iron is reduced. So this is redox reaction. So carbon monoxide reduces iron 3 oxide to molten iron. Molten iron. बताइए इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है? बताइए the density of molten iron is low or high? Lower. No, it's high. That's why we collect it at the bottom, to the bottom. समझ आ रही है? So density of molten iron is high. So we get it
from the bottom of the furnace. This is step 2. Now step 3. Decomposition of calcium carbonate. Decomposition of calcium carbonate. We have calcium carbonate, limestone. At high temperature, it converts into calcium oxide plus carbon dioxide. This is called thermal decomposition. This is called thermal decomposition. Now silicon dioxide यानी मिट्टी is an acidic impurity it is removed by reacting with calcium oxide which is basic in nature. So this is acid base reaction. So calcium oxide react with sand which is acidic and form calcium silicate. All are solid. This is calcium silicate. Calcium silicate. Calcium silicate is called slag. Calcium silicate is called slag. बताइए स्लैग कहां से रिमूव होता है? टॉप से बॉटम से? From the bottom, sir. From the bottom. Slag floats on the top of molten iron. Both are tapped off. Both are tapped off यानी बाहर निकाला जाता है उसे. Separately, मिक्स नहीं होते हैं. Separately. कहां से? At the bottom. बोले आपको ये बात समझ आ रही है? Do you have any question? No, sir. अच्छा अगली अब जो क्लास होगी उसमें मैं इसके पास पेपर कराऊंगा. अभी एक और रह गई है जो है एल्युमिनियम की. ठीक है बरीरा, आपको समझ आया है? Yes. मैं आपको इसके जैसे कंप्लीशन होगी ना तो मैं आपको सबको इसके पीडीएफ बना के भेज दूंगा. बस आप में से कोई मुझे या तो उमर या साथ आप में से कोई दोनों में से कोई एक याद दिलाएगा तो जितना मैंने पढ़ाया उन सब की पीडीएफ आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह. Okay, sir. ठीक है चलो टेक केयर. अल्लाह हाफिज.
Sir, Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz, Allah Hafiz, Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, beta.